चलो हाँ बोलोगे, राधे राधे करो। हेलो, वेलकम टू आवर लाइव। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? होप सो सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी दिनचर्या में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी दिनचर्या में से कुछ समय हम आपके लिए निकालते हुए तो और हम निकालते हुए आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि कुछ टाइम हमारे लिए निकालें। सो चलिए फटाफट से आप लोग जुड़ते जाइए। तो फटाफट से जुड़ते जाएं, जल्दी जल्दी जुड़े। जल्दी जल्दी जुड़े फ्रेंड्स, फटाफट से जुड़ते जाइए।
जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ें और फिर आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे। हम 10 से 15 मिनट वेट कर रहे हैं कि पहले सब जुड़ जाएं, फिर एक बार ही अपनी टॉपिक शुरू करेंगे। बिकॉज टॉपिक स्टार्ट होने के बाद आधी अधूरी बात पे ना इंटरेस्ट नहीं रहता। तो मैं ये चाहती हूँ कि इंटरेस्ट रेट के साथ हम बातचीत करें कुछ भी। सो दैट्स वाई। तो चलिए हम वेट। तो क्या बोले फ्रेंड की कहूँ, बिल्कुल भी हमरा लग समय नहीं रहे है। अहाँ सब कहबै कि लाइव में आबि कऽ बाल झाड़ै छै। की करूँ, छोट बच्चा छै, लाइव छै, काज छै, और सारे कामों को तो लेके चलना है ना। तो किसको छोड़ सकते हैं, आप ही लोग बताओ किसको छोड़े। घर की जिम्मेदारियां और कुछ करना है तो फिर उसमें किसी को डिस्टरबेंस होगा, थोड़ा लेट सेट हो जाए, फिर उसमें चार बातें सुनो अलग से। घर में भी कोई आपको सपोर्ट तो छोड़ो, और वही नहीं करता। ओबे चले में ओई में जो आप चल जाओ ना, ओई में ओ एक्टिवेट करो फ्री एप्स। तो
Thank you so much. Thank you so much for joining, everyone. Mubarak.
थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर गिविंग मी अ लवली मैसेज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। श्री एक्सपेरिमेंटल जी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड कमेंटिंग मी लवली मैसेजेस।
तो हेलो एवरीवन। तो फटाफट से आप लोग जुड़ते जाइए, जल्दी जल्दी अपने लवली लवली कमेंट्स करते जाइए। और हम अपने लगे हैं काम में, और जल्दी जल्दी से जुड़ते जाइए साहब, फटाफट से। हाँ कभी करो ना था क्या करिए। हेलो, जल्दी जल्दी से जुड़ते जाइए आप लोग। फिर खेले की पूरे लाइन भर के लिया हम। ये नहीं ले, ठीक है। हाँ क्यों? क्योंकि उधर से कैसे डालना नीचे थे। ऐसे तो नहीं आते कोई, इसके घर में कोई क्यों नहीं आते भाई? कोई नीचे कुछ पंखा वंखा चलाता है, कोई कीपैड चलाते हैं, रंगू चलाते हैं, फिर आग में लग जाता है। आज मेरा बेटा चाय पिलाएगा हमें थोड़ी देर में। इसका मुंह बहुत फूलता है मेरे बेटे का, क्या कहें। क्या बेटो, आँख दर्द है ना? आँख दर्द नहीं चला। हाँ आज तक कोई चिपक रहा है इसलिए वो जुकाम से हो रहा है बेटा। और क्या सब आज बनेगा? थैंक यू सो मच फॉर लवली कमेंट्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, अपने मूल्यवान समय में से कुछ समय हमारे लिए निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अपना सपोर्ट हम पे बनाए रखें। और लला थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही अपने मैसेज से हमें सपोर्ट करें, और मैं चाहती हूँ कि लग पे रखा वो कोना में ही रह जाता है। भाई तो मम्मी का क्या ना वो कोने में ही नहीं रहता है। सपोर्ट भी पता नहीं।
कम मना रहे फ्रेंड्स आप लोग होली। तो होली की वीडियोस है ना कहीं लल्ला, किसी फोन में देखा है? हमने जो मनाई हुई है मेरे फोन में तो नहीं है। मुझे एक वो भी बोल देना पापा, एक वो भी मंगा दे। क्या? पक्का कलर का एक। पक्का कलर का मंगाने पापा ऑर्डर कर दिए हैं। पता नहीं, ऑर्डर करेंगे तो। हाँ कर दिया ऑर्डर। जैसे मेरा आता है ना वैसा आएगा भाई पूरी। जैसे मेरा आता है खोल दे ऐसे ही आएगा। क्यों क्या क्या बनाएंगे? दो को एग्जाम है तो दो के हम लोग उधर खेलेंगे। छोटे लोग को तो ऐसे आते हैं। दो को एक एग्जाम है, क्या है? दो के छुट्टी में हम लोग खेलेंगे होली। बेटा आप थोड़ा पपूस पर कर दो। अच्छा वहाँ ड्रेस नहीं गंदा करना ज्यादा, फुर्सत नहीं रहेगा, धोधा होगा कि नहीं, मतलब खेल लेना, कलर्स वगैरह से नहीं खेलना, दाग लग जाएगी फिर कहाँ से लाएगा नया शर्ट। थोड़ा बहुत देखो, तुम किसी को नहीं लगाओगे गलत, कोई तुम्हें नहीं लगाएगा, तुम पहले कोई लगाएगा तो तुम बोलने के हकदार हो। मतलब भाई देख थोड़ा बहुत वो खेल ले अबीर वगैरह, क्योंकि देख किसी के भी गंदे होंगे तो भाई नेक्स्ट डे आना भी है ना। या तो वो ब्लू वाला हाफ वाला पहन के चल जाइए ना। देखेंगे ना कहीं बच्चे आने लगे हाफ पहन के भी। आने लगे हैं वो बच्चे, देखा है? ब्लू श्री चले जाएंगे होली वाले दिन, वो पहन के चले। नो। तो फ्रेंड देखिए मिथिला थे ना, तो हम आज सब संगे आप लोगों के साथ में एक शेयर करने जा रही हूँ वो कि नो, वो ये है कि देखिए सुनो ना, एक्चुअली बेटा जी मैं कुछ बात कर रही हूँ, आप उधर जाओ। तो मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूंगी, वो ये कि जैसे कल हम सब पागल हो गए मेरा सुनो, कल ना हम सब मंगेने रहिए कि पेट में अमृत दे दे। आओ थोड़ी देर में 2-3 अमरूद काटेंगे। श्री मोबाइल ना गिरे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे बेटे का किट बैग, जो कि 6,500 का वो किट बैग है। और क्योंकि इतने वेटेड सामान सब इसमें रहते हैं ना, भाई का सीधी पैक है कि एक क्लीन वाला एक ये वाला तो भाई का तो एक ये वाला किट है एक वो वाला किट। वाह वाह मुझे पर टोपी रहने दे, बहन कुछ हो जाएगा, रखूंगा भी वापस। ओके थोड़ा देर एंजॉय कोई कर लेगा, क्या हो जाएगा, बहन है अपनी, इतना तो लोग पड़ोसी को भी छोड़ कर देता है। तो देख बेटा जहां से उठा रहे हो वहीं रखना, ठीक है? का मेरा पैटर्न है। तो ये हाँ, तो ये देखिए इमारत को देखा भी ना, ऊपर ऊपर एक को देखा भी ना, ये देखो, ये देखियो हमारे बेटी के, ये अपन भैया के एकेडमी के चश्मा लगा का कह दियो जय मिथिला जय मैथिली, मिथिला दे मैं देख ले लिया है। हाँ सबके कह दिलक ना जय मिथिला जय मैथिली। तो रखना आईपैड एक्चुअली मैं हमारा बेटा था भगवती कृपा से टचवुड नजर नहीं लागे, खाली एकेटा चीज छे, किच्छो काज कहूँ तो बहुत अलसाई छे, ठीक छे। दोसर बात अनठावे बहुत छे काज की, एकटा काज कहबे लला लला 10 बेर बजवा दे अहाँ के लला लला तो हिल कहाँ क्या बोल रही हो। अहू में कोशिश करत कि एते हड़बड़ी में काज करू छे वो काजे गड़बड़ा, क्वालिटी ऑफ माय लल्ला। यार दूसरी बात होना है तो
और हम वहाँ सबके संग हैं।
आउट हो गई। तो हाँ, बस मैं वही आपसे शेयर करना चाह रही थी। तो देखिए, छोटे बच्चों वाले घर में तो फ्रेंड्स कितना भी मैं समझा लूँ, बेटा मैं लाइव सेशन कर रही हूँ, मत आओ, डिस्टर्ब मत करना, तो नहीं समझती है। बेटा मेरा बड़ा है, वो समझ जाता है। तो प्लीज डोंट माइंड फ्रेंड्स। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि कल हमने कोई ग्रॉसरी ऑर्डर की। ओके, आउट हो गई। कल कितने बजे मम्मी? शाम में ग्रॉसरी ऑर्डर की थी और कुछ पूजा नीड्स की चीजें थी। तो फ्रेंड्स, और किसी ने नॉनवेज बनाया था, नॉनवेज मंगवाया था हमारे ही एरिया, मतलब उससे फ्लैट से। तो वो ऑर्डर लेके आया था, तो मैंने देखा उसी बैग से वो निकाला, उसी बैग से वो निकाला। तो मैं बस ये, हम लोग ये सोच रहे हैं, देखो हम लोग एक्चुअली मिथिला ब्राह्मण है। तो हमारे में ऐसा होता है कि चिकन और एग वगैरह नहीं, लेकिन मटन और वो क्या कहते हैं, फिश खाते हैं। ठीक है, और खाते हैं तो इसकी बहुत ही मतलब नियम वगैरह है, बहुत ही हार्ड नियम है। हम्म, पहले और बहुत ही नियम है इसमें, जैसे बनना बनाएंगे तो उसके लिए गैस अलग होनी चाहिए, बर्तन अलग हो, बर्तन अजय सब मिथिला सची तिनका तो बुझले है। और बर्तन अलग होने चाहिए, गैस वगैरह अलग होनी चाहिए। जो बनता है हमारे तो जन्म से लेके अंत्येष्टि तक सारा काम में नॉनवेज का होता है जरूरी। अभी फिलहाल सासू माँ एक्सपायर कहने रहा है, मेरी सासू माँ एक्सपायर की थी अभी कुछ दिन पहले। हम लोग 2.5-3 साल से नॉन छोड़ दिए हैं, प्रेमानंद जी के उससे स्पीच से प्रभावित होकर, मतलब उनका प्रवचन सा एहन एक बात कहलखिन जे हम सुनलहुँ, हमरा तऽ राधा रानी सँ कृष्णा जी सँ हम मंगलहुँ कि हे माँ हमरा शक्ति दिया। ओहिसँ पहिले हम 2 बेर कोशिश के लिए छोड़ऽ के, तऽ हमरा नहीं छोड़ायल, नहीं छोड़ायल। तो हम राधे एहि बेर सच में कहै छी, हम राधा रानी के छोड़ देलियै। हे माँ राधा रानी हमरा हिम्मत दिया और हमार काज करे ला ये गलत काम मेरे से ना हो। 2 बार छोड़ना चाहिए थी, तो एक बार के पहले 2 बार कुछ ना कुछ सरकमटेंसेज, मेरे पेरेंट्स या रिलेटिव्स, ऐसा नहीं होता, सुहागने ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती। मैम इसने कोई गलती कर दी मैम, 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 इसने कोई गलती कर दी। हो गया, अब बोलूं मैं? जब मेरी बेटी मुझे परमिशन देती है, ओके मम्मा अब आप बोल लो, तब मैं बोलती हूँ, फिर वो चुप हो जाती है। अब मैं बोल लूं? ओके, अब ये नहीं बोलेगी, मैं बोलूंगी तो यही है कि पागल हो गई। तो ऐसा है। हाँ, तो बीच में बोलोगी तो डिस्टर्ब होगा ना बेटा। तो बहुत सारे नियम होते हैं। तो मैंने देखा कि अरे भाई उसी में ले आया। और हमारे में क्या होता है, इतनी ग्रॉसरी और पूजा की नीड्स थी, तो हम तो इसे प्याज लहसुन में भी छुआ के नहीं रख सकते। पता है आपको, हम लोग जो भी पूजा पाठ करते हैं ना, तो प्याज लहसुन अगर हम मसाले रखते हैं ना, तो एक डब्बा मसाला अलग राशन में किचन में रहता है, और एक में हम लोग पूजा पाठ के लिए अलग नमक हल्दी सब्जी मसाला और धनिया पाउडर ये सब अलग से रखते हैं। कि प्याज लहसुन कभी बन रहा है, कभी उस हाथों तो उस हाथों से तो नहीं, बर्नी छू गई। तो इसीलिए इतना जो परहेज करता है उन लोगों के साथ उस हिंदू धर्म का मतलब ऐसे आस्था को चोट पहुंचती है ना, मुझे बहुत ही खराब लगता है।
तो कहने का मतलब मेरा बस ये है कि आलू का आलू बेटा कहाँ है? क्रेडिटेड। बैगन ले लाता मारी डोला है मम्मी ने पार किया रहे थे। अजीत अंकल दुबई गए हैं। मैं पागल भाई बस है ना? ना काम है। फ्रेंड आज के डेट में भी इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं, बिलीव नहीं होता कि एक है हम लोगों के गांव के ही हैं, वो एज में तो छोटे हैं मेरे हस्बैंड से, बट इतने जेन्युइन है वो, आपको क्या बताएं उनकी तारीफ में, मतलब कुछ नहीं कह सकते। कहते हैं ना कि फोन आएगा देखना मुझे। अब उत्तर अंडा दो दिल क्या बुझल छोतरा कता इच्छा इन्वर्टर के दिया दिखा कहाँ से दिखाऊं, छूछा कर दोगी तुम अंदर है एकदम अब इन्वर्टर। अगर हो जाता है ना तो छूछा भी नहीं कर। ये ना मतलब बोतल में रखती पता ही नहीं चलता पॉकेट नहीं पता चलता, नहीं और पता चलना चाहिए ना पर। पता चलता है हाँ पर मेरे दोस्त को पता नहीं चलता तेरे पास कौन सा करती है क्या जो मन डॉग चला के तो मैं एक लाती हूँ और मुझे दिक्कत होती है इतना सारा कलर लेने की। अच्छा पर मैंने अपने दोस्त से मांग किया कलर ठीक है। और वो दे दिया मुझे। ठीक नहीं हाँ हाँ नहीं ओके। वो थोड़ी ना अरे जाल बंद कर घुस जो तो आराम से जा, कहाँ मार रही है थोड़ी की जाएगी। अब आने ही मत दो, दूसरा भी दे देगी उसको ऑन करने में। गला हाँ दे दो इसका सपोर्ट दे दो थोड़ा। और फ्रेंड्स प्लीज आप लोग माइंड मत करिएगा कि आपकी बेटी है बगल में, इसलिए क्योंकि बेटी छोटी है, इधर उधर रहती है फिर भाग के आ जाती है, और मैं कितना ही टाइम इतना वेट करूं कि ये ना रहे, तो इसीलिए फ्रेंड्स थोड़ा आप लोगों को, फ्रेंड इनको कुछ नहीं है। श्री उधर चली जाओ। क्या कह रहे पता है, तुम सारा पेंसिल ऐसे रखी हो, खो जाएगा, आप ऐसे ही करो, यही सारा यही खो दी। मुझे कल जरूरत है, कल एक्स्ट्रा इसी जरूरत में है। रखो ना, इसी में यूज कर लो, फिर इसी में रखो, नो प्रॉब्लम। पहले टाइम जब देते हैं तब तो बड़ा शांति से, अरे भाई गलती से बोल दिया, तेरा है तेरा है,
वो दे उधर डलिया दे, श्री डलिया दे, पीछे डलिया दे, डलिया दे, डलिया दो ना पीछे से। तो ऐसा ही है कुछ। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, पॉकेट में रखना है। ओके इसको बच्चा नहीं समझिएगा, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, बड़ा धमाका। श्री वो वाला करके दिखा दो ना, क्या आता है तुम्हें? नहीं पता। देखो फिर मुझे नहीं पता, वो बोला रे। जय भोले की बोल के मेरा चैनल देखो खोल के, जल्दी से करो। की बोलो मेरे चैनल कर लो फॉलो, तुम्हें बढ़िया मिलेगी वाइब, मेरे गाने को कर लो लाइक, मेरा वीडियो सरकाना ना, बिना कमेंट किए कहीं जाना ना, मेरा वीडियो सरकाना ना, बिना सुंदर रिक्वेस्ट केला क्या है यहाँ के गीत गायब का, इतना सुंदर रिक्वेस्ट किया है आपको गाना गाना के, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट तो बनता है ना, लाइक कमेंट तो बनता है। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग लाइक करें, कमेंट करें। क्या कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा है भाई? हाँ हाँ बोला है ना, पिटेगा ये। क्यों बोला लला? हाँ मतलब भाई हर छोटी चीज के लिए भी लड़ाई होती है। बोल के मेरा कर लो फॉलो, तुम्हें बढ़िया मिलेगी वाइब, मेरे गाने को कर दो लाइक। लला ड्राइंग रूम की लाइट जला दे, और भगवान रूम की भी लाइट जला दे, राधे राधे बोल के। चल जा, हाथ जोड़ ले। थोड़ी देर में भी लाइव चल रही है, मेरी लाइव हो जाएगी फिर। तो फटाफट से फ्रेंड आप लोग कमेंट्स करें, सपोर्ट करें मुझे। लला भूल गई की करना है। अच्छा हाँ ठीक है था, ठीक है था। ग्रुप चढ़ा दो। काहे उतारता चढ़ाता काहे रहता है? नहीं वो वाले पे ब्लैक चढ़ा दी ना, अब दोनों कहाँ बैट से? को लेके जाऊंगा। क्यों ऐसा क्यों किया? इधर बदला बदली क्यों किया? क्योंकि इसका आधा है, इसको कम यूज करता हूँ, उसको ज्यादा यूज करता हूँ, तो इसका उसका फुल था तो इसलिए कर दिया। बाहर का भी लाइट जला दे। कर दिया मैंने। जब जीने का लाइट जला दिया। जीने का भी जला दिया। देखिए फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि बच्चों को पता होना चाहिए कि शाम हुआ फटाफट से लाइट जलाना है,
जूठा पता होना चाहिए अपने लोग में। तो हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे में हाँ की बहुत ही, अगर नॉनवेज खाते हैं लेकिन उसका बहुत ही सावधान से खाते हैं। बताया था कि अलग बर्तन, अलग चूल्हा, ये सब होता है। तो हमारे में कहते हैं कि सुहागन जो होती हैं वो नहीं छोड़ती हैं ये नॉनवेज वगैरह, हमारे में खाते ही रहते हैं, मतलब सुहागन लोग। जैसे कि वो सुहागन लोग नहीं छोड़ेंगी करना, मतलब खाना नॉनवेज, अच्छा नहीं बोलते। लेकिन क्या करें कि ये बात कुछ ऐसी है कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है, हाँ, मतलब कोई ऐसा मैटर है कि अगर हो, मतलब उसमें आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, हमारे में ऐसा होता है कि नहीं छोड़ना है। बात करते करते उन्हें मटर इसमें डाल दिया, छिलके हैं तो ये सारी बातें हैं। हाँ, तो हम भी बहुत प्रावधान से खाते हैं। तो लेकिन हमारे में राशन, ग्रोसरी वगैरह, उसको कभी जूठे हाथ से ग्रोसरी की बर्तन नहीं छूते। और ना हम प्याज लहसुन के हाथों से छूते, क्योंकि हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारा नियम निष्ठा हम लोग करते हैं। ठीक है, तो उस नियम निष्ठा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी बातें होती है। ठीक है, तो हमें ऐसा, अगर हमें नॉनवेज वाले पैक में देखिए ना, हमें तो बड़ा ही गुस्सा आया। मेरे हस्बैंड ने तो सारा ही ग्रोसरी रिटर्न कर दिया, बोला कि नहीं भाई, हम नहीं चाहिए, हम नहीं रख सकते इसे अपने किचन में, तो आप रिटर्न डाल दो। श्री क्या है? बैर, सर्दी हो जाएगी बाबू, भाई को दो, धो के दे देगा। बेटू सर्दी रहे ना, मत खाओ शाम में, शाम में बैर नहीं खाओ, सुना, सर्दी हो जाएगा। तो हाँ, मेरे हस्बैंड ने सारा रिटर्न डाल दिया। उसने पूछा कि क्या हो गया सर, हम तो टाइम से लेके आए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं भाई, ऐसा है कि तू इसी में नॉनवेज लेके आया है और उसी में राशन लेके आया है। और एक्चुअली वो मुसलमान था। देखिए, उसे नहीं पता, मैं मान सकती हूँ कि चलिए उसे नहीं पता, बट वहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि पैक करने वाला, चलिए पैक करने वाला को बोलेगा भैया मुझे ऑर्डर आया है तो मैं तो पैक करके दूंगा। बट मैनेजर, कोई भी ऐसे पोस्ट पे जिन जो भी हिंदू होंगे वो तो ध्यान रख सकते हैं ना कि भाई एक ही पैकेट में नॉनवेज जा रहा है, एक ही पैकेट में वेज जा रहा है, कि कैसे ये मैनेज हो सकता है। हाँ, तो ये समझ नहीं आ रहा कहीं से फ्रेंड्स ऐसे मैनेज का मुझे। तो यही सारी बातें हैं। तो मेरे हस्बैंड ने वापस कर दिया। एक बात बताइए, ये उन्होंने सही किया कि गलत किया, प्लीज आप लोग बताइए। हम लोग एक्चुअली राशन में प्याज लहसुन भी छोड़ा जाता है ना, जो मसाले निकाल के रखते हैं वो अलग बर्मी में निकाल के रखते हैं। और पूजा पाठ के लिए, लला देखिए गिर गया, देना 2-3 दिन। और हम लोग जैसे कि हम लोग पूजा पाठ के लिए अपना, जैसे बेटा 2-3 दिन गिर गए नीचे, कैसे कर दो, वो अलग से रखते हैं हम लोग। हाँ जी। हम लोग की पूजा पाठ में का है ये, तेरे पैर के पास भी है। श्री इधर आइयो। तो ये कि ना, मतलब उससे ना छुआ जाए। देख तो दिया सजा के आए पापा, नहीं सजा के आएंगे तो अलग बात है। लहसुन प्याज से भी नहीं छुआ। वो अब पूजा पाठ में, वो हम लोग पूजा पाठ से एक दिन पहले जो जैसे कल व्रत करेंगे तो एक दिन पहले हम लोग सादा खाना खाते हैं, तो उसमें भी हम लोग प्याज लहसुन से अगर छुआ जाता है
नमक हल्दी मतलब सब कोई भी मसाले का डब्बा, तो हम उसको तो यूज ही नहीं करते, तो वो तो महज ओ हाँ वो देखी रहा है नीचे, दे देना मटर दे। अब ये हाँ वेरी गुड, सारा कूड़ा उठा के फेंक दो फूल में। दे दे बेटा। तो हम लोग करते ही नहीं है, नॉनवेज भी लाया है तू उसी थैले में, और हमारा ग्रोसरी लाया है, मेरे हस्बैंड तो कर दिए, आगे कंप्लेन भी डाल दिए। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ठीक है वो मुसलमान था जो लेके आया, और सब तो भैया हिंदू, वहां पे कोई था ही नहीं क्या? किसी को नहीं पता कि कोई भी हिंदू आदमी पूजा का सामान है प्लस राशन का सामान है, वो आप नॉनवेज के साथ ले जा रहे हो तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर देख लेगा तो। मेरे हस्बैंड देख लिए तो उसी में से एक बंदा ने वो निकाला और एक बंदा वो निकाला, तो मेरे हस्बैंड देख लिए कि भैया तो नॉनवेज है। तो मेरे हस्बैंड उसको जो डांटे डांटे, वो तो बोल रहे सर ऊपर से हमें जो आएगा वो करेंगे, ठीक है समझ गए। लेकिन आप जो वहां पे कोई भी हिंदू नहीं होंगे क्या, देखिए जब तक आप अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं होंगे, आपको भी मतलब कोई भी हिंदू वहाँ आसपास है उसको ये नहीं फर्क पड़ रहा कि भैया देखिए हमारे को किसी भी हिंदू को कितना ठेस पहुंच सकता है कि उसी में राशन जा रहा है, उसी में नॉनवेज जा रहा है। तो जिस हिंदू को ये सब नहीं मालूम है वो तो हम समझते हैं कि भैया उसका हिंदू होना ही फेलियर है, क्योंकि और अपने धर्म के प्रति आप जागरूक नहीं होंगे, सब एकजुट होकर नहीं अगर आवाज उठाएंगे तो इस पे भी फैसला नहीं होगा। मेरा ये कहना है कि ये बातें संज्ञान में रहनी चाहिए। ये मतलब डिलीवरी पार्टनर्स हों, मैनेजर्स हों, या ऊपर लेवल पे जो भी हैं बिजनेसमैन, जो भी साइट पे हैं, वेज नॉन वेज जो भी सेल आउट करते हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए, उसके लिए अलग व्यवस्था बनाई जाए कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनकी जो ऑर्डर्स है वो जो जाएगी तो उसके साथ ग्रोसरी या पूजा नीट की सामान नहीं जाएगी। ये दोनों एक साथ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, पूजा नीड की सामान अलग से और ग्रोसरी और मतलब नॉनवेज अलग से। ये नॉनवेज अलग से, ये जरूर मैं तो अपर लेवल तक का ये मैसेज जरूर डालूंगी कि नॉनवेज अलग से डिलीवर की जाए। इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े, और मैं आशा रखती हूँ कि सब हिंदू एकजुट होकर इस बात पे राय विचार करें कि देखिए हमारा जो राशन आता है, पूजा नीट की सामान आती है, वो नॉन वेजिटेरियन, चलिए वो तो सब समझ रहा है कि एक ही बैग से कोई लाता होगा उसी में ले आके रखता होगा, समझ गए हम बात, पर एक साथ लाना जैसे ये लिशियस है, बस हाँ वो नॉनवेज बेचता है, हाँ फ्रेश है, वो भी नॉनवेज ओनली। ठीक है। साथ में तो नहीं बेची ना। नॉनवेज भाई ठीक है समझ आ गया, लेकिन देखो अपना सेटिंग से। ठीक है ठीक है चलिए। चलो जी। लेकिन ये पूजा रूम का लाइट, बाथरूम का सब जगह का जला दो। तो यही सब बात है, समझे, और कोई बात नहीं है। तो 2 लोटा डाल लो, बड़ा कर दो बेटा, दियावती कर दो। ठीक है। फटाफट डाल लो। क्या रूम में जा रहा हूँ आ जा रहे हैं। मोटर चला ले, मोटर चला के भर ले फ्रेश पानी। आ जा हार से वो कैन खींच के ले जा। बॉडी है। और तो मैं स्पेशली इस बात को रखूंगी कि देखिए कोई भी नॉनवेज ऑर्डर कर रहा है तो अलग से डिलीवर किया जाए, वो पूजा नीट की सामान और ग्रोसरी के साथ किया जाए। हाँ तो कौन कौन एग्री है प्लीज कमेंट करें, और क्या मैं कोई ऐसा बेतुक की बातें तो नहीं कर रही, हाँ तो प्लीज इस पे अपनी राय जरूर रखें। तो अपना इसमें सर वो जरूर करें।
अपनी जरूर राय ऑन रखें कर दिया। इसमें। हाँ हाँ कर दो। 40 है भाई, थारे भाई की 40 सात छक्का बारह हो गया हक्का पक्का। ये टीवी चले छे ना लला। यस मॉम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मम्मी एक बार लाइव क्या तो मेरा तो यही है, आप लोगों का क्या सोचना है फ्रेंड्स, और आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या मैं सही सोच रही हूँ कि नॉनवेज अगर डिलीवर हो रही है तो उसको सेपरेटली डिलीवर करना चाहिए? मेरा ये सोच है पर्सनल फ्रेंड। आप लोग बताइए आप लोगों का क्या मानना है कि, और मेरा तो मानना यही है कि कोई भी हिंदू भाई इससे डिसएग्री नहीं करेंगे, सब एग्री करेंगे मेरी बातों से। तो एग्री अगर सब कर रहे हैं तो प्लीज़ एकजुट होकर मेरे वीडियोस को शेयर करें। और मेरी ये जो अपील है कि भाई नॉनवेज आप अलग से डिलीवर करने का कोई प्रावधान बनाएं, ग्रोसरी या पूजा नीड्स के सामान के साथ ना दें प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। इससे हमारी आस्था को चोट पहुंचती है, और ये बातें अगर हम नहीं रखेंगे तो हम क्या आशा रखते हैं कि कोई मुसलमान ये हमारी परेशानी को आगे रखेगा? उन्हें क्या पता भैया। और वो तो लहसुन प्याज मीट मछली दाल भात फल फ्रूट सब एक समान समझते हैं, उन्हें क्या पता पूजा पाठ कुछ चीजें। तो यही है बातें, ये मेरी। मम्मी हाँ हाँ एक बार पिंक बॉक्स को छुइयो। करबद्ध। हेलो लल्ला, ये करबद्ध मेरा मजा आ रहा फिर हाँ 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 दे रही हूँ। ये मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि प्लीज जो भी सुनो, जो भी मुझे सुन रहे हैं, चाहे किसी भी हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, ब्लिंकिट हो, या फिर क्या है डील शेयर, और क्या है लला बिग बाजार, कुछ नहीं, कोई भी बिग बाजार डंजो या फिर सिटी मॉल, कोई भी जेप्टो, जो भी आप नॉनवेज डिलीवर कर रहे हैं, सो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप लोग जो नॉनवेज डिलीवर करते हैं तो इसका अलग से आप प्रावधान करें डिलीवर करने की, प्लीज एंड प्लीज प्लीज। आप लोग ग्रोसरी या कोई पूजा नीड्स के साथ इसे ना डिलीवर करें। बहुत ही आहत होता है हमें 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 मतलब एज अ हिंदू होने के नाते हम जहाँ लहसुन प्याज भी हम व्रत से एक दिन पहले जो खाना खाते हैं वहाँ हम लहसुन प्याज ना छुआ जाए, वो मसाले भी हम 2 जगह रखते हैं। ऐसे जा रहे थे ना तो ऐसे लग गया, मेरी गलती, मैंने ऐसे किया है। हम वो भी अलग रखते हैं फ्रेंड्स की, वो जो बर्नी में हम जो डेली दिनचर्या के दिन हम खाते हैं वो कहीं लहसुन प्याज के हाथ से छुआ तो ना गया हो, वरनी ये आशंका में हम पूजा पाठ से एक दिन पहले जो खाना खाते हैं साफ सुथरा, जिसे हम लोग अरबा अरबैन कहते हैं जकराम, हाँ, तो उस दिन भी हम नहीं खाते लहसुन प्याज का छुआ हुआ। तो आप सोच सकते हैं पूजा या फिर ग्रोसरी का सामान हम नॉनवेज में एक ही बैग में आया हुआ कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज एंड प्लीज प्लीज आप लोग कोई भी प्लेटफॉर्म से हैं, अगर मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है तो प्लीज आप लोग नॉनवेज डिलीवर का कुछ अलग से प्रावधान करें प्लीज। पूजा नीड या डेली नीड्स के सामान ग्रोसरी के साथ आप ना भेजें। देखिए जो जिनको ये सब नहीं उतना आहत होता है उसके लिए कोई बात नहीं, पर जिनको आहत होता है उसका आप ध्यान रखें। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदू धर्म से जो होगा वो ये नहीं सोचता, उन सबको आहत होगी, क्योंकि वो किचन में अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का वास समझते हैं। हम भी समझते हैं, हम झूठा हाथ से भी कुछ बर्तन नहीं छूते, तो बताइए नॉनवेज से तो हम कितना ही
चोट पहुंचा होगा, ये देख के हमें आप आशा लगा सकते हैं इसका। तो चलिए, आप लोग विचार अपना अपना जरूर रखें मेरे आगे कि मैं कोई ऐसी बेतुकी बातें तो नहीं कर रही, और अपने मतलब सुझाव कमेंट्स के जरिए मेरे तक पहुंचाएं आप। मैं सदा आभारी रहूंगी आपकी कि इस मैटर पे मेरे सॉल्यूशन में बहुत परेशान हुई। परेशान होने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी लाइफ पे ये सोशल मीडिया पे रखूं, में भी कोई सॉल्यूशन हो, किन्हीं के कान तक ये मेरी बात पहुंचे और ये सॉल्यूशन मेरा निकल पाए। तो मैं तो करबद्ध निवेदन यही करूंगी हाथ जोड़ के कि भाई प्लीज ये नॉनवेज वाला आप सिस्टम का कुछ निदान निकालें, क्योंकि उसका निदान अति आवश्यक है। ठीक है, चलो। मैं आप लोगों को मतलब जो ये आप लोगों के समक्ष बातें रखी हूँ, तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप इस संदर्भ में क्या सोच रखते हैं? क्या मैं सही मतलब अपना जो भी रिक्वेस्ट रखी हूँ कोई बेतुका रिक्वेस्ट तो नहीं है, कोई इम्पॉसिबल रिक्वेस्ट हो या फिर जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता हो और मैंने उसे बस प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए किया हो, ऐसा है? आप क्या सोच रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर आप लोग अपने मूल्यवान समय से कुछ समय दे के ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। क्या मैंने कोई गलत रिक्वेस्ट रखा है? मुझे नहीं लगता कोई भी हिंदू धर्म से होगा, उसे कभी भी उसके साथ ऐसा हुआ होगा तो उसे आहत नहीं पहुंची होगी। 110% फ्रेंड्स मैं बोल रही हूँ कि उन्हें ये आहत पहुंची होगी। और ये देखिए, जैसे कि दाल वगैरह निकालने के लिए रहता है ना आप लोगों के पास कंटेनर, मैं भी मटर छील रही हूँ और मटर छिल गई है। और ये देखिए, ये मेरा कंटेनर जिससे कि मटर निकल रहा है, देख रहे हैं। और फिर मैं ये रहा पैक कर दी इसे। हाँ, कंघी करके दे दो। उधर गिर गया है जहाँ पे तेरा नीली गुड़िया है, इधर नीली गुड़िया।
इधर नीली गुड़िया, नीली गुड़िया है ना उधर ही। हाँ हाँ हाँ, मिला दिख गया। देखो मेरा बेटा लेके आ रहा है। अरे जल्दी आओ। आलू के सामने बोलते अब तो गंदा हो गया, गंदा नहीं, वॉश करके यूज हो सकता है, गंदा क्यों हो जाएगा। तो मैंने 10 किलो मटर लिया था, 10 किलो लिया था और 10 किलो छील लिया है मैंने। एक्चुअली होता क्या है, मटर का सीजन चला जाएगा तो जो भी मटर वटर है थोड़ा सा हम इसे रख लेते हैं, और रख लेने के बाद छील के फ्रीजर, इसे थोड़ा सा गर्म पानी से निकाल देंगे और फिर इसे हम ठंडा करके ठंडे पानी से धो के ऊपर डीप फ्रीजर में रख लेंगे। तो फिर इससे क्या होता है कि मतलब ये हम वो क्या कहते हैं, फ्रोजन मटर बना के रख लेते हैं, जिससे कि हमें 2-3 महीने तक काम आता है। हमारा ज़्यादा दिन नहीं रहता फ्रेंड्स, 2-3 महीने काफ़ी है। तो चलिए शाम हो गया है तो मैं थोड़ा सिर पे रख लेती हूँ, क्योंकि हमारे में ना एक्चुअली शाम के टाइम नंगा सर नहीं रहना चाहिए, तो इसीलिए रख लेते हैं। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। तो चलिए फटाफट से भगवान को याद कर लेते। बेटा जल्दी कर लो। और आज मेरा गाय का बहुत सारा हो गया है, तो मैं गाय का बहुत सारा ये लेके हॉटी मीन सारा पॉटी मीन मम्मी तू चुन्नी ओढ़ी है ना। हाँ गेट खोल लेता कनी। मेन गेट आराम से, श्री चोट ना लगे। खुला तो है। हॉटी मीन बस इसलिए अभी जान नहीं खोलना, जाला भी नहीं खोलना। और बताया ना मैंने कैसे करना है पहले। हाँ पता है, पहले गेट पे थोड़ा सब पता। पहले तो थोड़ा पानी गिरा के 2-2 बूंद चले जाओ दोनों जगह। हाँ, फिर उसके बाद मेरी बात सुनो। फिर उसके बाद एक दिया लाना है, बस ही फिर रख देना, फिर जला देना है। फिर उसके बाद इधर लाना है, इधर दिया रख देना पहले अच्छे से पानी डाल के, फिर जलाना है, फिर अच्छे से प्रणाम करके जाना है, फिर आरती का थोड़ा नहीं तो वहीं जला लेना है, वहां जला लिया, भगवान घुमा के तुरंत आके यहाँ रख दिया, उतनी देर में गर्म नहीं होता। मैं सिर्फ इधर ही जला। ठीक है जला रहे हैं। ठीक है, क्या ले आए श्री? और मंत्र सब आता है, मंत्र सब शुरू करो। तुमने महाकाया वो आता है। वो पहले फटाफट से पैरू पैंट पैरू, साफ सुथरा पैंट, साफ सुथरा जो पहने थे। एक्चुअली हमारा मन ठीक नहीं है तो हम नहीं दिलिया है, साँझ बाती बुआ दे छे तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो दिया बाती बेटा दे रहा है। तो बेटा को, बेटी बड़ी नहीं है, बेटी रानी छोटी है, तो बेटे की जिम्मेवारी है ये। तो हम लोगों की एक फ्रेंड थी, वो लोग 3 बहन थे और 2 भाई थे। बड़ा ही भैया को हमने देखा था, उसके छोटे भाई को नहीं देखा था। 2 भाई थे, तो वो लोग पढ़ने आते थे। ठीक है, बहुत अच्छा कि बहुत अच्छा करते थे। तो हाँ, तो उनकी जो एक बहन थी वो मेरे साथ पढ़ती थी, एक बहन जो थी वो मेरे से थोड़ी सीनियर थी। तो हम लोग कभी लेट हो जाता था तो उनके घर जाते थे ना बुलाने, तो देखते थे कि इसके भैया ना चोटी बना रहे। उन लोग का बहुत बड़ा बाल था,
तो सविता और सुनीता नाम था। सविता हम लोग के क्लास में थी, सुनीता दीदी उससे थोड़ी बड़ी थी। और मेरे पापा, जहाँ की मैंने बताया आपको कि मेरे पापा प्रिंसिपल थे, एक प्राइवेट स्कूल था जो कि 12 तक था, तो उसी स्कूल में मेरे पापा प्रिंसिपल थे, 1 से 5 तक के बैच के। तो ट्यूशन भी आती थी वो दीदी लोग, मेरे पापा ट्यूशन भी पढ़ाते थे। सो तो हम लोग जाते थे ना, तो उसके भैया छुट्टी बनाते थे। उसके भैया जवान बड़े थे, उसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, तो वो जो मम्मी का कर्तव्य होता है उसमें थोड़ा हाथ बटाते थे अपना, जैसे बाल बाल बना देना बेटियों का, ये सब काम होता है गार्जियन का, तो उसमें वो ना हेल्प करते थे गार्जियन की। ठीक है, मच्छर घुस गया, जल्दी करो। हम लोगों का होता है एक्चुअली क्या, शाम को वो नहीं करना, गेट वेट नहीं बंद करना। बेटा लगा रहे हैं दीपक। तो तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम आप लोगों के समक्ष ऐसे ही हाजिर होंगे, और आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। तो तो ये हो गया है, मटर हमारा छिल गया है। तो चलिए फिर दिखाते हैं। मटर हमारा गिर गया, फैल गया है बहुत मटर। कौन आपने आज मैंने बहुत नहीं दिखाया। मैं डंडे से पोछा मारती हूँ ना, तो वो भी डंडे से मार रही, कह रही मम्मी मैं भी पोछा मार लूँ। तो चलिए, पोछा मार रहा है बेटा। लाओ लाओ लाओ, मोड़ दे, लाओ लाओ बेटे, वो रुमाल उठा लो, वो रुमाल उठा लो, वो रुमाल उठा लो।
विष्णु भगवान का नाम लो। नमो भगवते वासुदेवाय। प्लेट खा लिया। वो नहीं लाया हूँ मैं, उधर रखने दिया है ना, पानी डालना पहले भूल गया, तो उधर पानी डाल के उधर जाऊंगा भूल जाऊंगा। ये रहा छिलका मटर का, और ये रहे मटर। तो चलिए, ये देखिए, ये मेरा बेटा राजा दिया बाती लगा रहा है। तो होती होती मम्मी थारा होती अच्छा, ये देखिए आपके कर्मों का, जैसे आपने जो अपने बच्चों को सिखाया है उसका असर। तो ये देखिए, ये मुझे ठीक नहीं है तो आज मुझे पूजा नहीं करना है। तो ये देखिए, ये मेरे बच्चे दिया बाती कर दिए, इसके पापा ने दिया की तैयारी कर दी और ये बच्चे ने दिया लगा दिया। और ये देखिए, ये मेरी बेटी जिसको कि दिया लगाना था, उससे दिया उसके भाई ने मना किया, तो वो अपने प्लेट में ही दिया बाती लेके दिखा रही है भगवान जी को। देख रहे हैं? तो ये है कि आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम धर्म से जुड़े हैं, हमारे बच्चे भी जुड़े हैं। और देखिए इतने सारे मंत्र आते। बेटा मंत्र का भी उच्चारण कर दो एक बार। तो चलिए फिर हम आप लोगों से मिलते हैं